Hey guys, welcome back to my channel, and in today's video we gonna try this one dip makeup challenge. And for this, let's get started. Now I'm gonna take this L'Oreal Paris micro essence, and I'm just gonna take one pump of this, just one pump. मुझे इतनी हंसी आ रही थी बिकॉज यू ऑल कैन सी एक पंप में पता नहीं कहाँ जाके गिरने वाला है. एंड येस, इट वेंट लिटिल बिट इन माई लेफ्ट आई, बट इट वॉज फाइन. मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा सा स्मच कर दिया है एंड इट्स फाइन. आई कुड ब्लेंड इट, दैट्स इट. बट बहुत कम प्रोडक्ट लेना पड़ा. And now with this Cetaphil moisturizer, I'm just gonna press my thumb once. That's it. मतलब जितना आएगा मुझे उसी से काम चलाना है. And my God, this is so little. Right now my skin type is so dry. पता नहीं how I'm gonna work with this. I think जितना blend होगा I'll do it like this because मैंने जानबूझ के डॉट डॉट नहीं किया. फिर वो अगर पूरा फेस पे नहीं लगेगा तो it would have been a flop. So I just rubbed my palm and then trying to spread it equally. Actually नहीं है इतना product. I am just damping my hand on it ताकि थोड़ा थोड़ा लग जाए सब जगह बराबर. And now I'm gonna use this Milani foundation. I'm in the shade 01. I'm just gonna take one pump. Yes. Guys, actually foundation में इतना problem नहीं आता है because this is a full coverage and playing it smartly मैंने वही choose किया क्योंकि I wanted a full coverage. As you all can see, I have so many acne marks right now. But with very little I had to take and spread. But ठीक है, I think it might give a good coverage. Let's see, let's blend now. Guys, neck के पास लगाने के लिए तो कुछ नहीं बचा था. But I was like, ठीक है यार, okay. Brush को ही blend करके फिर I'll smudge it around my neck and all. So let's see. Till now, it's giving a good coverage. And these challenges are fun to do. I mean, it's fine. इतना अच्छे से हो रहा था with very little products. I mean, you can actually. And yes, guys, हमेशा foundation should match your neck and chest. That is your correct shade of foundation. And you all can see it is blended so well. इतना skin type लग रहा था ना, मतलब थोड़ा भी heaviness, थोड़ा भी cakey, nothing. It is just looking like skin. And it's actually nice to use just little products and create. You all can see I've just put एक ही बार मैंने concealer निकाला है बाहर stick. I'm not gonna dip it again. एक ही बार में जितना आया मैंने लगा लिया. But ठीक है, concealer थोड़ा आ गया. I knew that I could play safe with this. So it's fine. थोड़ा बचा था, थोड़ा eyelid पे लगा लिया. And yes. Now I'm just gonna blend this with my PAC brush. This is a concealer brush. Yes guys, जहाँ पे थोड़ा मतलब proper coverage नहीं मिला, I had to blend it with this concealer itself. Basically, I wanted a coverage on my chin and cheeks because I have lot of acne marks right now. बट ठीक है, कंसीलर लगाने की वजह से ये ठीक हो गया. एंड नाउ आई एम जस्ट गोना ब्लेंड ऑल दिस वेल. गाइज, अगेन मैंने क्या किया इज आई पिक द फुल कवरेज कंसीलर. दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर इज awesome. I mean, it is so full coverage that you don't need even foundation after this. Usually when I just do a very basic makeup, I only use the concealer and I'm done. एंड येस, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. मज़ा तो अब आने वाला है बिकॉज आई एम गोना यूज़ कॉम्पैक्ट एंड दैट्स गोना बी जस्ट वन डिप. आई हैव जस्ट क्लीन द creases and now I am gonna take the loose powder. This is the Maybelline Fit Me Loose Compact. So I am gonna take enough product कि एक ही बार में ब्रश में अच्छे से लग जाए. So I'm just gonna dip and just I'm gonna rotate it once nicely ताकि इसमें अच्छे से कॉम्पैक्ट आ जाए. एंड नाउ आई एम जस्ट गोना प्लेस फर्स्ट. इतना ज़्यादा आ गया था ना एक्चुअली. आई न्यू दैट आई हैड टू सेट माई बेस. तो
इसको पहले अच्छे से लगा लिया एक ही बार में एंड देन आई हैड टू ब्लेंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता. बट गुड दैट आई पिक्ड एट वंस, अदरवाइज बहुत कम आता तो पता नहीं, you know, it would have become really oily a side and a dry a side or something. So it is fine. Or you can see now that I'm blending it so well कि मैंने extra compact पूरा हटा दिया था. Guys, with this I am तो definitely learning कि with very little products no you can actually get such a nice base. ये इतने अच्छे से set हो गया, you all can see it is giving a super base. Just perfect. Now I'm just cleaning my lips once because foundation, concealer, compact सब कुछ आ गया था lips पे and I really don't like it. And now for the eyebrows, I'm just gonna dip it once in the powder. This is the Nykaa eyebrow palette. I'm just gonna press it once ताकि एक eyebrow में एक dip में कर पाऊँ. मैंने एक ही बार dip किया है and now I'm gonna start making my eyebrows. गाइज मुझे आईब्रोज बनाना बहुत पसंद है एंड इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आप लोगों को पता है कि मैं कुछ ना करूँ तो इट्स ओके, बट आई सी दैट आई डिफाइन माई ब्राउज. आई डोंट नो, दैट गिव्स मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. एकदम एक डिफाइंड लुक आता है, इट गिव्स यू अ यंगर लुक, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी. And yes guys, like always I'm asking you all to just try once. And yes, if you want to learn basic makeup looks and step by step makeup looks or any tutorials, first thing with the base or after the base is your brows. It is very important to make your brows because the overall look looks so defined and so complete just by making your brows. As for the eyebrows ना, यहाँ पे सामने ब्रश में प्रोडक्ट ही नहीं है लगाने को and I had to just comb and little bit I had to fill because luckily this brush had little bit of product. And now to bronze my face I'm using this Wet n Wild bronzer, or to just contour I am just dipping it once and pressed it well. And now I'm just gonna apply it one side and the other side ताकि equal product deposit हो जाए and then you just have to blend. Oh my god, I didn't believe कि इतने कम product से you know I could create such nice makeup look. हम लोग चुम्मा we keep putting the brush all the time in the product and we want more and more. But it actually works well just by dipping it once and थोड़ा सा प्रेस करने से अच्छे से प्रोडक्ट आ जाता है and that's really enough. And you all can see how beautiful it is looking. And now for the blush, again I'm using another brush, just rubbing it once. I'm done. I'm just gonna put it on both the sides and blend it well. Now this is going to give a very natural look because इसमें actually product इतना आया ही नहीं. Actually swiping motion करने में I forgot to press. But फिर भी I think very natural, very subtle look it is giving. And now for the highlighter, I'm gonna use this Makeup Revolution highlighter. Just gonna swirl it once. Oh my god, I knew this would be enough because it is super pigmented and it's an amazing highlighter. I'm just gonna apply it once everywhere where I need to highlight, and then now I'm gonna blend everything well so that everything looks well blended and gives a flawless base. Here you all can see there's no product coming out and I'm just blending it. थोड़ा रब कर के निकाल रही थी, but it was fun to do this. It is like adjustment में makeup. Yes guys, now for the lashes I'm gonna use this Essence mascara. And what happens is usually when we use the mascara, this is just one dip, मैंने एक ही बार बाहर निकाला है, and I'm gonna use it for both the eyes. Eyebrow के लिए, see definitely the product doesn't come out much, so you need separate for both the eyebrows.
मस्कारा के लिए आई हैड टू थोड़ा एक तरफ करने के बाद उसको ब्रश को घुमा के आई हैड टू डू द अदर साइड, बट इट वॉज रियली फन डूइंग दिस बिकॉज पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरफ से प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, बट ओवरऑल इट गेव मी अ गुड medium full lashes. And now for the eyeshadow, I'm gonna use this Huda Mercury Retrograde palette and I'm just gonna pick this pink once. You all can see मैंने वापस नहीं लिया है प्रोडक्ट को, just I'm gonna touch this side and the other side of my eyes and इसी को मैं blend करने वाली हूँ. Guys, I saw few videos, people were touching 2-3 eyeshadows and they were like one dip है ये one dip है. ठीक है वो कर सकते हैं, बट आई थॉट नहीं यार, आई शेडो जब एक ही बार लेना है तो वन सिंगल आई शेडो आई एम गोना पिक एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड दैट. एनीवेज जब सब कुछ इतना सटल है तो आईज को भी बहुत ज़्यादा सटल रखना चाहिए. एंड सो आई डिडंट गो विथ मैनी कलर्स कि इसको भी एक बार डिप वन डिप. नो, आई डिडंट डू दैट. Just once I pick the product and you all can see I'm gonna blend it so well that it's gonna look fine. थोड़ा सा लेफ्ट आई करने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हुआ because there was not much product, but ठीक है उसको जैसे जैसे blend किया it was fine. मैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया because I had to just pick once and I didn't realize that मेरा ये लाइनर old है, मतलब it is so पुराना that it had already gone so dry. This was like little bad because I could not choose or I should have chosen my latest eyeliner जो अच्छे से liquid form में है. You all can see मैंने एक आंख तो बना ली, but now to do the other eye I could not. And like one mad जो बचा हुआ था मैंने lashes पे लगा दिया थोड़ा थोड़ा, उसमें ऐसे भी प्रोडक्ट नहीं था. सो आई हैड टू डिप इट वंस अगेन, शेक इट वेल एंड रिमूव इट ओनली वंस, बट वंस में भी प्रोडक्ट ही नहीं आया बिकॉज वो इतना सूख गया था, अंदर कुछ था ही नहीं अंदर. सो देन आई डिसाइडेड दैट आई विल यूज़, आई ट्राइड एक्चुअली 2-3 टाइम्स बट हुआ नहीं, तो फिर मैंने ये आई ड्रॉप्स यूज़ किया मैंने, लेकिन एक ही ड्रॉप डाला इसमें भी. सी आई एम फॉलोइंग द रूल, एक ही बार डाला, एक ही ड्रॉप डाला एंड नाउ आई एम जस्ट गोना शेक इट वेल. ट्रस्ट मी, आई वाज सो स्कैर्ड, आई जस्ट पुट वन ड्रॉप, ये वर्क करेगा भी या नहीं, बट आई हैड टू, बट वो हो गया था. सो एंड गाइस सॉरी इट गॉट डिलीटेड, बट सीरियसली that one drop really worked. Guys, ये करना बहुत easy था because this is anyways we just removed the liquid lipstick once and it's really enough to fill your lips. तो इसमें कोई challenge ऐसे नहीं था, but yes, overall it was fun to do. Guys, this lipstick is from the brand Nikake and this is a beautiful lipstick, a proper nude for all skin types, I can tell. You all can see it is a pinkish nude and it's a beautiful formula. If you have not seen this, I had shown this lipstick in my Nykaa haul. This is my recent purchase and this is a very beautiful lipstick. And yes guys, now I'm gonna set my makeup with this pack setting spray and I'm just gonna press it once. बस जितना आया उतने में काम चलाओ. So it was fine. You all can see it is giving a little bit of glow and yes, it would have set my makeup also well. And yes guys, with this I complete the challenge and this is my final look. You can see बहुत subtle सा, glowy सा, प्यारा सा makeup हुआ है ये. And it is actually looking pretty. I did not expect it to come out so well, but yes, ये challenge ने prove किया है कि you don't need much or too much of makeup just to look beautiful. Very little is just enough. And yes guys, अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं तो please यार एक like दो. That's gonna give a smile on my face. And please do subscribe and share to your friends and family. That's gonna motivate me and I would love to come out with many more amazing videos. Yes guys, also don't forget to press the bell icon so that you are updated with my latest videos. See you all in my next video. Till then, bye bye.